Again, a very good morning to all of you, everyone, and welcome back to ExamDost. Welcome back to the ESE Officer Series for Engineering Services PYQ. We are live in the lecture number 5 for Electric Circuit. Okay, तो इलेक्ट्रिक सर्किट का आज फिफ्थ पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं. Come on, everybody. चलिए, let's get started. First question. I need the H parameter of this circuit. This is from ESE 2001. I need the H parameter of this circuit. So beta, this is a T network. The Z parameters are very simple. 8, 4, 4, 8. Which means V1 is 8I1 plus 4I2. In H parameter, we need V1 and I2. We need V1 and I2. So from the second equation, I can tell that I2 is now beta you have V1 and I2 in terms of I1 and V2. So answer is B. So when you see a standard network like a T or a pi network, so first find the direct parameters. जैसे T network के लिए Z parameters are direct, pi network के लिए Y parameters are direct, and then convert them to the desired parameter. How are the H parameter related to the Z and the Y? This is again ESE 2001. V11, V1 is H11I1. Okay. Now what is H11? That is short circuit impedance. Now the short circuit admittance is Y11. So this is 1 by Y11. Now you might think that this is Z11. No beta. Because Z parameters are taken under open circuit. This is under short circuit. So this is reciprocal of Y11. What about H22? I2 by V2. I1 is 0. So 1 by Z22 because it is open circuit admittance. Under open circuit we study Z parameter. तो ये मत सोचना I2 by V2 will be Y22. It will be 1 by Z22. Okay. So answer is C. Beta PDFs are available on our website under free download section. The response I, again ESE 2001. The response I of a network is expressed by the differential equation. Now V is A e to the power 2t. How does the dominant solution look like? How does the dominant solution look like? So we have to solve by Laplace transform. Okay. Now when we do partial fraction, okay, so S equal to 2 means A by 5. And then what about S square plus 1? We can say KS plus suppose F. Okay. Now this term will give me cos and this will give me sine. So this will be the dominant solution.
Why? Because it does not die out. Okay. These are undamped oscillation. They do not die out. तो डोमिनेटिंग वो होगा ना बेटा जो खत्म ना हो. दिस तो विल बी a/5 e⁻²t. एक मिनट, लेकिन ये होगा बिकॉज इट एक्सपोनेंशियली ग्रोज. अगर डीकेइंग होता ना तो आंसर वुड बी डी. If this was decaying, the answer would be D, but it is exponentially growing, so the answer will be C. एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है ना, तो ये कभी खत्म नहीं होगा, बल्कि ये बढ़ता जाएगा. अब साइन कॉस की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होती है. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एंड कॉस इज 1, बट इट विल गो अप टू इंफिनिटी, एंड सिंस इट इज गोइंग अप टू इंफिनिटी इट विल डोमिनेट. ओके, चलिए नेक्स्ट. फाइंड द y पैरामीटर्स ऑफ द नेटवर्क. Find the y parameters of the network. So this is the case, and this is open. So I2 is 0. So you can write 0 V1 plus 0 V2. So answer should be C. Very simple. Since current is 0 for all values of V1 and V2, it is 0 V1 plus 0 V2. Again, ESE 2002. This is from ESE 2002. Next, what is Y12? ESE 2003. This is a pi network. This is a pi network. So what is the Y parameter matrix? Add the admittances connected to a node, negative of admittance between the two nodes, sum of admittance connected to a node. Diagonal, sum of admittance connected to a node, of diagonal is negative of admittance between two nodes. So it is C. Minus YC. ESE 2003. तो पाई नेटवर्क के डायरेक्टली y पैरामीटर पता होने चाहिए और T नेटवर्क के Z पैरामीटर. You must always know the y parameter of pi network and T parameter of Z network. A lattice circuit has ZA and ZB. The Z parameters are. Again ESE 2003. ZA and ZB is given. It is asking us the Z parameters. Now beta see how to solve the lattice network. Okay. अब देखिएगा जरा. This is I1, V1. Assume this current as I. So this is okay. Now this I variable is the extra variable that I have assumed. ये एक एक्स्ट्रा वेरिएबल है जो मैंने लिया है, जो टर्मिनल वैल्यू का पार्ट नहीं है. इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द टर्मिनल वेरिएबल. So I will apply KVL in the shape of it. Minus IZA minus I2 plus I ZB
प्लस I1 माइनस I2 ZA प्लस I1 माइनस I ZB. Now collect the terms containing I, ZA, ZB, ZA, ZB. What about terms containing I1, ZA plus ZB? Terms containing I2, ZA plus ZB. Okay. Now apply KVL. I1 minus I, ZB, ZA. Minus I. Okay. So what will be the coefficient of I1? ZA plus ZB by 2. I2 minus ZA. Okay. Similarly, V2. Okay. So now ZA plus ZB by 2 is 3. ZB minus ZA. ZB minus ZA is minus J4. Minus J4. V2 will be V1 minus I into ZA. I into ZA. Minus ZA by 2. V1. V2 is V1 minus I into ZA. I is this into ZA. So I ZA by 2 minus I ZA by 2. I2 ZA by ZB plus 2. ZA माइनस आई जेड ए अगर करता हूँ तो I1 इंटू जेड ए बाई 2 प्लस I2 इंटू जेड ए बाई 2. I2 इंटू जेड ए बाई 2 और I1 इंटू माइनस I1 इंटू जेड ए बाई 2. माइनस 2 जेड ए. ये तो सही है, जेड बी माइनस जेड ए. मैं सोच रहा हूँ नहीं, ऐसा नहीं कहते ना V1 से डायरेक्टली. सही बात है, नीचे ग्राउंड थोड़ी है. हाँ, तो यही आना चाहिए. बस बात ये है कि V2 में आएगा I2 प्लस आई माइनस, या फिर ऐसे ले लो V2 में इसका ये आ जाएगा मेरे हिसाब से B. ये भी जेड बी माइनस जेड ही आएगा. ठीक है, तो आंसर विल बी बी. बी आ जाएगा. ठीक है, तो ये बन जाएगा क्योंकि जेड ए प्लस जेड बी बाई 2 इज 3 माइनस ये, तो ये बनेगा.
ठीक है भाई, तो लैटिस नेटवर्क ऐसे सॉल्व किया जाता है, बीच में एक करंट आई लेते हैं, फिर 8 के शेप में केवीएल लगा के आई को एलिमिनेट करते हैं। फर्स्ट एज्यूम अ करंट आई, देन एलिमिनेट आई विद द हेल्प ऑफ केवीएल इन द शेप ऑफ 8। ओके, चलो नेक्स्ट। A circuit is modeled by the following differential equation. The response IT. ESE 2003, this is ESE 2003. What is the response I? So take the Laplace. S I0 S plus 3 square. So the response will be like this. Using partial fraction, the response will be like this. This is the case. Basically, this is critically damped. ये आपका critically damped में चला जाएगा. Okay? Because it has real and equal root. ESE 2003. Try the next one. Short circuit natural frequency at port 1 of the above circuit. देखो यार, इस क्वेश्चन में मैंने क्या बोला, इट इज आस्किंग द शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस, तो मैंने यहां पे शॉर्ट कर दिया, तो दीज टू एलिमेंट्स बिकम शॉर्ट सर्किटेड. Admittance of this is 2, admittance of this is SC, that is S. Now this 1 farad and half ohm are in parallel, so admittances are added, so Y11 is S plus 2. S plus 2. ये ट्राई कीजिए. ऐसे दो टी सेक्शन आपने सीरीज में जोड़े हैं, रिजल्टेंट का Y11 चाहिए. वी हैव कनेक्टेड टू सच टी सेक्शंस इन सीरीज. आई नीड Y11 ऑफ रिजल्टेंट. तो बेटा बेसिकली Z पैरामीटर ऑफ दिस इज, पहली लूप का रेजिस्टेंस 11, रेजिस्टेंस बिटवीन मेश इज 1, सेकेंड लूप रेजिस्टेंस इज अगेन 11. In series, the Z parameters are added. Now for Y parameter, we have to take inverse. So 1 upon determinant, diagonal element exchanged
ऑफ डायगोनल का नेगेटिव ऑफ द ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ओके, तो आप क्या करते हैं, इनवर्स लेने के लिए 2 क्रॉस 2 का डायगोनल एक्सचेंज, नेगेटिव ऑफ द ऑफ डायगोनल एलिमेंट। वेरी सिंपल। टू पोर्ट नेटवर्क, व्हाट इज द पैरामीटर H21? ESE 2005। अगेन बेटा टी नेटवर्क है, बट देखिए कंप्लीट मैट्रिक्स नहीं पूछ रहा है। तो व्हाट इज H21? I2 by I1 when V2 is 0. तो देखिए this current will be divided into two parts. I2 will be negative because it is going in reverse direction, है ना। I2 अंदर आ रहा और करंट जाना चाहिए राइट में। I2 is to the left, current should be to the right. ISRO vacancies are for electronics, not for electrical beta. Electrical notification usually they release separately. Minus 0.4. Because as far as I remember last time, ISRO electrical notification was separate. चलिए Y मैट्रिक्स वेरी इजी, डू इट डायरेक्टली। अभी अभी मैंने बताया पाई नेटवर्क के लिए Y मैट्रिक्स कैसे बनती है। अगेन ESE 2005, just now I told you how to write the Y parameter matrix for a pi network. So again this is a pi network, you can directly write the Y parameter matrix. Come on. So the diagonal element are sum of the admittances of diagonal negative of admittance between two nodes. A. Correct answer is A. Very good Ajit. Next, list 1 को list 2 से मैच करना है। Norton equivalent of one port, open circuit output admittance, reciprocal network, transmission parameter. ओके तो देखिए नॉर्टन इक्विवेलेंट का क्या आएगा, करंट सोर्स इन पैरेलल विथ थेवेनिन इंपेडेंस, ओपन सर्किट आउटपुट एडमिटेंस, so that is 2 because H22 is I2 by V2 when I1 is 0. Open circuit output admittance. रेसिप्रोकल नेटवर्क जहां पे Z या Y मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो जाए, सिमेट्रिक माने इक्वल ऑफ डायगोनल एलिमेंट। मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है ना, देखो रेसिप्रोसिटी की कंडीशन क्या होती है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी, Z12 इक्वल टू Z21 और Y12 इक्वल टू Y21, so this is 1. Transmission parameter V1 I1 are expressed as a function of V2 and minus I2, so 4213. समझ में आया? What is the meaning of this statement कि Z और Y मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो जाए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स means that the off diagonal elements are mirror image of each other, या upper triangular and the lower triangular part of a matrix are same. अपर और लोअर ट्राइंगुलर सेम हो जाए या ऑफ डायगोनल सेम हो जाए तो उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। दैट इज द कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी। व्हाट इज द रेसिप्रोसिटी कंडीशन फॉर एबीसीडी पैरामीटर, ESE 2008। ESE 2008 का क्वेश्चन है। आंसर इज बी, determinant of T matrix is 1, AD minus BC is 1. Very good Ajit. Next,
Match the parameter with the dimension. Again, ESE 2008. ESE 2008 again. H11 V1 by I1. So H11 is impedance, H12 is the voltage ratio, H22 is the admittance, H21 is the current ratio. 1423. 1423. कंट्रोल और सिग्नल का पीवाईक्यू बेटा नीरज सर लेंगे, लेकिन होगा. A series RLC switched on to a step voltage at t equal to 0, initial and final value of current. So it is from ESE 2008, initial and final value of current. Both are 0. Why? T equal to 0 minus, source is 0, inductor is uncharged, so I0 is 0. T tending to infinity, steady state. Capacitor is open. Again, I infinity is 0. ठीक है? I infinity is 0. चलिए next. For the two-port network ESE 2009, two-port network, what is the value of Y21? जब एक पैरामीटर पूछा जाए, always use the formula for that one parameter. उस एक पैरामीटर का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए. I2 by V1 when V2 is 0. So this is short circuit. Y3 V1. Y3 V1 कैसे हुआ बेटा? The voltage here is V1. This is 0. So Y3 V1. Current here is 0. GM V1. This is I2. KCL लगा लीजिए. Y3 V1 plus I2. आंसर इज सी. क्लियर हुआ लॉजिक? जब भी एक पैरामीटर पूछा जाए सीधा उसका फॉर्मूला अप्लाई करें. ठीक है? For the, if the Z parameter are 40, 50, 30, what are the value of Z1, Z2, Z3? ESE 2009, again very easy because we directly know the Z parameter of a T network. The diagonal element are sum of impedance in a mesh of diagonal impedance between two mesh. तो 10, 20, 30 A. ठीक है, 10, 20, 30. बहुत बढ़िया अजीत भाई. ESE 2010, a two-port network is defined like this. What is the value of Z12? जैसा मैंने पहले भी बोला, एक पैरामीटर चाहिए तो फॉर्मूला अप्लाई करें. V1 by I2 when I1 is 0. Okay, I1 is 0.
35/3, 41/3, 3/41, तो आंसर इज सी। सी आ गया। समझ में आई कहानी? Y parameters of this network, ESE 2010 again. Y parameters of this network. देखिए V1, V2, तो I1 is now apply KCL. So this is the value 0.04 minus 0.04, 0.04 minus 0.03. The answer will be B. Simple. Next, a two-port network is described by the following equation, which is not correct. What is not correct out of these? Again ESE 2010, इनमें से क्या करेक्ट नहीं है? This is Z12, so this is correct. Now Y12 is this. ठीक है, अब V10 from the second equation, this is also correct. H12, if I1 is 0, V1 is 20I2, V2 is 10I2. So the answer should be A. What is A? तो मैं ये इक्वेशन से ही बना रहा हूं बेटा सारी चीजें। जैसे इसमें I2 0 रख दिया, V1 V2 निकाल लिया, फिर रेशो, या फिर इसमें I1 0 रख दिया, V1 V2 निकाल लिया, फिर रेशो, इस टाइप से। ठीक है, ESE का इंट्रोडक्टरी वीडियो मैं बनाता हूं। ESE 2011, consider the two-port network H12. Find out H12. चलिए, when one parameter is asked, we have to use the basic concept. V1 by V2 when I1 is 0. When I1 is 0. V1 by V2. ESE 2011. देखो, if I1 is 0, this voltage will be V1. This alpha I1 will also be 0.
So these two are in series. D. R2 by R2 plus R3. देखो पेपर का लेवल इम्तियाज भाई इजी रहता है, लेकिन पेपर का जो फ्लो है या ये कह लो पूरा जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो काफी लंबा है, 1 साल लग जाता है उसमें. A two-port network is defined by this relation. Okay. Y12. चलो निकालो भाई. अब तो मैंने आपको बता दिया ना एक पैरामीटर निकालने का तरीका क्या है. फाइंड Y12. Okay. So 3 by 4. Make V1 equal to 0. Make first equation 0. So 3 by 4 I1 is 1 by 4 I2. So I2 is 3 I1. Then from second equation, put I2 is equal to 3 by 2 I1. There is 1 Siemens. Answer is C. Next, beta, very easy. ESE 2011, the Z parameter matrix of the T network. Z parameter matrix. Diagonal element, sum of impedance in a mesh of diagonal element impedance between two mesh. बेटा आज शाम को मैं करूंगा, लेकिन करना तो और लोगों को भी पड़ेगा. कुछ सिर्फ एक लोग के करने से बात नहीं बनेगी ना, क्योंकि देखो गेट में तो कोई एक लोग भी करते हैं तो मुझे लगता है कि आईआईटी वाले सीरियस लेते हैं. मैं उतना रेलवे पे ट्रस्ट नहीं कर सकता कि किसी एक का ही ऑब्जेक्शन आ और वो एक एक ऑब्जेक्शन को ढंग से रीड करें. ज्यादा बच्चे करेंगे तो इम्पैक्ट पड़ता है. When port 1 of a two-port network is shorted, I1 is 4 I2, V2 is 0.5 I2. Which of the following is true? Port 1 is shorted, it means that V1 is 0. I1 is Y22 is 2. I1 is 4 I2. So answer is B. Y12 is 8. Y12 8 आ जाएगा. Next, again ESE 2011, 100 ohm resistor has a effective inductance and capacitance. Time constant at medium frequency. What will be the time constant at medium frequency? ट्राई करें. तो रेजिस्टेंस का जो प्रैक्टिकल मॉडल होता है ना बेटा, द प्रैक्टिकल मॉडल ऑफ अ रेजिस्टेंस दैट ऑलवेज कंटेन्स रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस. Resistance is in the series, sorry, inductance is in the series. Resistance and inductance are in series and capacitance is in parallel. ठीक है, कैपेसिटेंस पैरेलल में आ जाता है.
मीडियम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, ना तो हाई ना फिर लो। मीडियम फ्रीक्वेंसी माने एल और सी को कंसीडर करना पड़ेगा। हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या होता ना कि एल ओपन हो जाता, सी शॉर्ट हो जाता, और लो फ्रीक्वेंसी पे सी ओपन एल शॉर्ट। बट मीडियम फ्रीक्वेंसी मीन्स कि वी हैव टू कंसीडर द वैल्यू ऑफ एल एंड सी। ओके, so now the time constant। एक तो तरीका है कि हम z निकाल लें। देखो मॉडल ये होता है, दिस इज द मॉडल ऑफ अ प्रैक्टिकल इंडक्टर। ओके, अगर यहाँ पे R इंटू सी करो, तो दोनों से ही 1 नैनो सेकेंड आ रहा है, देयरफॉर 1 नैनो सेकेंड शुड बी आंसर। सिंस बोथ टाउ आर इक्वल, नेटवर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये कंडीशन होती है फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंस की, दैट इफ टू टाइम कांस्टेंट इन अ नेटवर्क आर इक्वल, द सर्किट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। What is the reciprocity condition in a two-port transmission parameter? भाई अच्छा खासा चांस है मुंबई जोन में इतने मार्क्स पे। हाँ, रेफरेंस मैं शेयर कर दूंगा बेटा, आज चैलेंज करने का सारे पीडीएफ आपसे शेयर कर दूंगा। द आंसर इज दैट द डिटर्मिनेंट इज 1। Consider a RL circuit where I is 5 e to the power minus 2t. The voltage across RL circuit is very easy. ESE 2012, find the voltage across RL circuit. Tan e to the power minus 2t. Okay, the current in a circuit is given by the steady state current is 12, then the value of alpha and the initial current. It is giving us the steady state current. So that is determined using final value theorem. Steady state current final value theorem से आता है। This S will get cancelled. ये जो S है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। 0.66। ऊपर से भी S स्क्वायर, नीचे से भी S स्क्वायर 1। Whenever S is tending to infinity, you consider the term having highest power of S. In the numerator, highest power of S will be 2. Denominator also highest power of S will be 2. So it will be 1. Unit impulse voltage is applied to an inductor of 1 Henry. What is the energy supplied by the source? What is the energy? Come on. Again, very easy question. So di by dt is delta t. Current is 1. So 0.5. See. See, 0.5.
तो भाई करवा लो जांच, अगर तुम्हें लग रहा है सॉफ्टवेयर खराब नहीं हुआ। मतलब सॉफ्टवेयर क्या खराब हुआ? जब तुम्हें पेपर देने में कोई तकलीफ नहीं हुई, तुम्हारे क्वेश्चन में कोई ग्लिच नहीं आया, तुम्हारा क्वेश्चन कोई रिपीट नहीं हुआ, तो सॉफ्टवेयर में क्या खराब हुआ होगा? किस चीज की आशंका जता रहे हो? ये तो वो वाली बात हो गई यार, किसी भी एग्जाम के किसी भी शिफ्ट में अगर गड़बड़ी होगी तो पूरा एग्जाम हमेशा रिकंडक्ट होना चाहिए। जैसे कि कितने भी जिस देश के एग्जाम ले लो, चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज ले लो, गेट ले लो, एसएससी ले लो, जितने भी मल्टीपल शिफ्ट में होते हैं, अगर कहीं पे भी कोई भी इशू है तो उसका मतलब यह है कि पूरा एग्जाम रिकंडक्ट होना चाहिए। अरे भाई मेरा सॉफ्टवेयर है, मेरा टीवी है, ठीक है, आज चल रहा है, मान लो इस क्लास में हैंग हो गया, तो क्या ये जरूरी है कि और बाकी क्लासेस में भी हैंग करेगा ही करेगा? अरे भाई सॉफ्टवेयर ने एक जगह एरर किया, तो अब आप ये कह रहे हो बाकी जगह भी एरर हुआ होगा, एरर तो बताओ, किस चीज की आशंका जता रहे हो, क्या एरर है? सॉफ्टवेयर खराब था, ना सॉफ्टवेयर की जानकारी, ना अता ना पता। भाई उन्होंने बोला है कि हम पेपर सॉफ्टवेयर से बनाते हैं, इसलिए सेकंड शिफ्ट के अंदर 50 क्वेश्चन रिपीट हो गए, ये बोला है। ये थोड़ी बोला सॉफ्टवेयर हैंग हो गया, चला नहीं, सॉफ्टवेयर ने फलाना कर दिया। बोला सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन क्रिएट हुए थे, उसने नॉन टेक के दोनों पेपर में सेम क्वेश्चन डाल दिए, और क्योंकि 50 क्वेश्चन रिपीट हुए तो हम पेपर रिकंडक्ट करा रहे हैं। सोचने वाली बात है। तो सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी क्या बता रहे हो? अब भाई बीपीएससी में सीट बढ़नी चाहिए नहीं बढ़नी चाहिए, इस बारे में बताओ, मैं क्या कर सकता हूं? ये तो सरकार के ऊपर है ना, कितनी भर्ती निकालते हैं। चलो, नाउ बेटा इन दिस नेटवर्क द वाई पैरामीटर्स, सम ऑफ द एडमिटेंस एट अ नोड, नेगेटिव ऑफ एडमिटेंस, सम ऑफ द एडमिटेंस। नाउ व्हाट इज H11? H11 is beta V1 by I1 when V2 is 0. H11 is half, ठीक है। तो आंसर तो यहीं पे हो गया, 1/2। वही मैं कह रहा हूँ ना भाई, तुम्हारे दिमाग में ना इतना कचरा भर दिया गया है सिस्टम को लेकर के कि सॉफ्टवेयर खराब हुआ है। जो लोग बताने वाले ग्रुप्स पे भी ना, तो उनको आइडिया कि सॉफ्टवेयर में होता क्या क्या नहीं होता, बस सॉफ्टवेयर खराब हो गया है। निहायत ही देहाती लोग हैं। सॉफ्टवेयर कोई रियल टाइम पेपर थोड़ी क्रिएट कर रहा था कि सेकंड शिफ्ट में बैठ के वही क्वेश्चन ला रहा था और तुमको दिखा रहा था। भाई पेपर पहले क्रिएट हुआ, पेपर क्रिएट होने में मिस्टेक हुई क्योंकि इन लोगों ने पेपर को वेरीफाई नहीं किया। प्रॉब्लम समझो ना, प्रॉब्लम एग्जाम कंडक्शन में नहीं, एग्जाम क्रिएशन में है। और कोई दिक्कत नहीं है, इन्होंने एग्जाम ही गलत सबमिट किया, जिस भी एजेंसी से एग्जाम कंडक्ट कराने वाले थे उसको पेपर ही गलत सबमिट किया है। अब उसका सिलेक्शन से क्या लेना देना? अब रुक जाओ, I2/V1 when H12 is H21, I2/I1 when your V2 is 0. So V2 is 0, I1 is 2V1, I2 is 2V1. So I2/I1 is 1. खत्म। तो आंसर इज 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अ टू पोर्ट नेटवर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन ESE 2013 ABCD पैरामीटर्स। आई नीड ABCD पैरामीटर्स। From the second equation, I1 is V2/20,
60 I1 V1 is 3 V2 see 120 answer is D 300 1 by 20 and 2 ESE 2013 ठीक है terminal voltage and current are indicated if the two port network is reciprocal अगर reciprocal है again ESE 2013 which condition will be true for reciprocal network the answer is C रेसिप्रोसिटी की ये कंडीशन होती है और एच पैरामीटर में सिमेट्री क्या होती है दैट द डिटर्मिनेंट इज 1 इन एच पैरामीटर कंडीशन ऑफ सिमेट्री इज दैट द डिटर्मिनेंट मस्ट बी 1 next the z parameters of a two port network are what are the z parameters of this two port network ESE 2013 again तो बेटा देखिए यू कैन कन्वर्ट दिस डेल्टा टू स्टार so this will be 1 into 2 by 5 so 2 by 5 1 into 2 by 5 2 by 5 2 into 2 by 5 4 by 5 2 by 5 2 by 5 plus 1 is 7 by 5 4 by 5 so z parameter 2 by 5 plus 4 by 5 6 by 5 तो आंसर इज बी अगर टी नेटवर्क में आ गया तो z पैरामीटर तो मैं लिख ही दूंगा द z पैरामीटर मैट्रिक्स वेरी इजी ESE 2013 अगेन what is the z parameter matrix of this network तो बेटा this is 0 ohm again this is a T network so 3 plus J4 3 plus J4 3 plus J4 5 plus J6 okay you take the sum and then impedance between two mesh very easy consider the following symbol ESE 2015 consider the following symbol for two port parameter H12 and H21 are dimensionless H11 and B have the dimension of ohms BC is dimensionless C is dimensionless which of the above is correct so H12 is V1 by V2 when I1 is 0 I2 by I1 so both are dimensionless yes V1 by I1 and B V1 by I2 so both are ohms B into C B is in ohms C is in Siemens so C is dimensionless C is not dimensionless C has the unit of Siemens so answer will be 1 2 3 1 2 3 very good Ajit bhai one port network has a capacitor parallel to a resistor what is the input admittance ESE 2015 again very easy what is the admittance so in parallel connection admittances are added two S plus 3
Answer is 2s plus 3. Very good. For the two-port network, V1 and V2 equation is given. These are the four statements. So which of the above are correct? ESE 2016. Which of these statement is correct? Come on. Which of these is correct? तो देखो यार, these are the Z parameters based on the equations 60, 20, 20, 40. So it is not symmetrical but reciprocal. Correct. If it is reciprocal, if it is not symmetric, so 3 is wrong. What about Y? Y is inverse of Z. So first is determinant. Then exchange the diagonal element. So 2 and 4. B. 2 and 4. Very good. Next question, beta. In terms of ABCD parameter of a two-port network ZA, ZB, ZC of equivalent T network are. आपको ZA, ZB, ZC बताना है, माने ABCD से T में, सॉरी ABCD से Z में तो आना ही है, फिर Z से T मॉडल बना के आपको ये T मॉडल के इंपिडेंसेस बताने हैं. So first you have to come from ABCD to the Z parameters and then draw the T network. So this is my ABCD parameter. So what do I need? I need V1 and V2 in terms of I1, I2. So V2 is basically 1 by C I1 plus D by C I2. What about V1? A. Substitute V2. देखो पैरामीटर कन्वर्ट करना बहुत ही इजी है, बस पता ये होना चाहिए कि LHS और RHS पे क्या चाहिए. Conversion of parameter is very easy once you know what do you need on the LHS and RHS. Okay. So now this value, so the diagonal elements of diagonal are sum of the impedances of diagonal is impedance between two mesh. Okay. So ZC, basically you can write AD minus BC by C, or you can write 1 by C. ZA plus ZC is A by C. So ZA is A minus 1 by C. ZB plus ZC is D by C. So ZB is D minus 1 by C. So what is the answer? A minus 1 by C, D minus 1 by C, 1 by C. A option. समझ में आया कैसे किया? पहले ABCD से Z में आया, यहां से Z पैरामीटर निकाले, दोनों को इक्वेट कर दिया.
The Z parameter, ESE 2018. The Z parameters of this T network, very easy. Diagonal are the sum of admittance of diagonal impedance between two mesh. Sorry, diagonal is the sum of impedance of diagonal is impedance between two mesh directly. A series RLC circuit is excited by a 100-volt DC source. The circuit is initially in the quiescent state. What is the current of the form? Current will be of the form. ESE 2018. Quiescent means quiet state. Means initial condition 0. So this is a second order circuit. अब देखो, solution is not asking for the constants. It is just asking the format of the solution. ये constant नहीं मांग रहा, सिर्फ मांग रहा है किस फॉर्म में आएगा. Alpha less than omega naught underdamped. Okay. R by 2L2. तो बेसिकली बेटा इस तरह का कुछ आना चाहिए. Now at therefore cosine term should be 0. This should be the format. Basically none of these. ठीक है, none of these आएगा. लॉजिक समझ में आया? 0 पे अगर करंट निकालोगे कॉस वाली टर्म बच जाएगी, बट इनिशियल कंडीशन इज 0, देयरफॉर बी मस्ट बी 0. so this should be the format. so there the answer will be none of these. is this clear to all of you बेटा? बताइए ये क्लियर हुआ? why I am saying none of these? why am I saying none of these? is that clear to all of you? V1 and V2 in terms of impedance parameter, ESE 2019, very easy. V1 and V2 in terms of impedance parameter B. Z11 plus Z12, Z21 and Z22. देखो यार, मेरे हिसाब से YCT में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन है, जो कि प्रैक्टिस के लिए अच्छी है. हाँ, कुछ क्वेश्चन के आंसर में बी इनकरेक्ट, बट वो तो हर किताब में ही होगा. When a number of two-port networks are cascaded, ABCD parameters are multiplied. Due to cascading, ABCD parameters will always be multiplied. Now Z parameters are given. I need ABCD parameters. So V1 is 20 I1 plus 10 I2. Based on Z parameters, I am writing ESE 2024 plus 30 I2. Now beta, in two port ABCD, I need V1 I1 in terms of V2 I2. So from the second, V1 is 20 I1 minus 60
प्लस 30, एक सेकेंड, ये डालना है उसमें 20 माइनस 60 प्लस 10 तो माइनस 50 होगा। तो डी, आंसर विल बी डी। वेरी गुड। Resonant frequency of the given series circuit ESE 2001. Resonant frequency of the given series circuit. So L equivalent is 2 plus 2 minus 2M. Sorry, plus है यहाँ पे. This is series additive. B. So answer is B. The inductance matrix of two mutually coupled inductors shown in figure 1 is given by 5 minus 4 minus 4 7. When the inductors are connected, then the equivalent inductance is. No voice? Voice तो आ रही है अजीत भाई, वॉइस तो आ रही है मेरे ख्याल से. हेलो, हाँ वॉइस तो जा रही है यार. चलो बनाओ. आपको इस कॉम्बिनेशन का इंडक्टेंस बताना है. दिस इज फ्रॉम ESE 2002. So now we have reached the magnetically coupled circuit. टू पोर्ट नेटवर्क भी हमारा हो गया. These are your options. देखो, सेल्फ इंडक्टेंस इज 5, म्यूचुअल इज -4. दिस इज सीरीज सब्ट्रैक्टिव. तो 20 हेनरी. ठीक है. इंडक्टेंस मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स आर द सेल्फ इंडक्टेंस एंड ऑफ डायगोनल आर द म्यूचुअल. A pole of driving point admittance function implies, pole means where the admittance becomes infinite, or you can say impedance becomes 0. So answer is B. Because I1 by V1 is suppose Y11. Pole means Y11 tends to infinity. So V1 is 0 for I1 not equal to 0. पोल का मतलब होता है डिनोमिनेटर 0 होना ना. पोल मीन्स दैट माय डिनोमिनेटर इज 0. नेक्स्ट, द ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन व्हेन s equal to 0 and s tending to infinity will be. या तो s टेंडिंग टू 0 पे because 1 by s will tend to infinity.
तो आंसर शुड बी बी। S टेंडिंग टू इंफिनिटी पे शॉर्ट हो जाएगा तो 0.75 विल कम। Driving point impedance ESE 2001 driving point impedance system is initially at rest. For a voltage signal of unit step, the current will be. So driving point impedance is Vs by Is. Voltage is unit step. So what will be I of S? So it will be 3 by 2S. At -2, it will be. So this will be the answer C. Okay, the answer will be C. For a input signal cos t, the steady state response is. Now this is very standard problem where we find the output due to a sinusoidal input. So for sinusoidal signal, instead of Laplace, we use the Fourier transform. So we replace S by j omega. H j omega is 1 by 1 plus j. Now convert this to polar form. This is in the first quadrant. वन बाय रूट टू कॉस टी माइनस पाई बाय 4। ठीक है, ये वाला तो हो ही गया रिपीट। करेक्ट, 20 हेनरी आ रहा था इसका। हाँ जी, नेक्स्ट इज ESE 2002 ट्रांसफर इम्पिडेंस इज ऑलवेज द रेसिप्रोकल ऑफ ट्रांसफर एडमिटेंस। इम्पिडेंस ऑफ अ नेटवर्क इज रेसिप्रोकल ऑफ द एडमिटेंस। बताइए, क्या ट्रांसफर इम्पिडेंस हमेशा ट्रांसफर एडमिटेंस का रेसिप्रोकल होगा? नो, बिकॉज दिस विल बी अंडर शॉर्ट सर्किट और इम्पिडेंस वी स्टडी अंडर ओपन सर्किट। याद है ना, Z parameters are open circuit parameter, Y are short circuit. So they are not reciprocal, but yes, for a network, Z and Y are reciprocal, but not the transfer impedance. अगर नेटवर्क का इक्वल एडमिटेंस या इक्वल इंपिडेंस की बात करूंगा ना, तो वो तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल आएंगे, बट ट्रांसफर इंपिडेंस और एडमिटेंस नहीं। Now, impedance of a parallel RLC network is given by this. We need the value of R, L and C. Similar question मैंने कल आप लोगों को दिखाया था। For parallel network, it is always better to go by admittance instead of impedance. So S by 5. In a parallel RLC network, the admittance is sum of the admittances. Now compare. Constant term is 1 by R. So R is 10. S by 5 is SC. So C is 0.2. 20 by S is 1 by SL. So L is 0.05. Okay. So RLC 10, 1 by 20, 1 by 5. Okay. समझे? 10, 1 by 20, 1 by 5. Next. Driving point impedance. The voltage will lead the current sinusoidal input if the voltage will lead the current sinusoidal input if
तो आंसर इज सी. सेम कॉन्सेप्ट एज लीड कंपेंसेटर. देखो आप कंट्रोल सिस्टम में लीड कंपेंसेटर पढ़ते हो ना, तो बेसिकली थिंक ऑफ इट, इंपिडेंस क्या होता है, V बाय I होता है ना. थिंक ऑफ इट लाइक VS is the output, IS is the input. So this is behaving like a transfer function. VS is the output, IS is the input. So this is basically similar to a transfer function, correct? So phase lead network is zero dominant. Means zero is closer to origin, correct? Zero is closer to origin. तो इसीलिए अल्फा मैंने बोला है बीटा से छोटा होना चाहिए. अल्फा एंड बीटा बोथ आर रियल पॉजिटिव बट अल्फा इज लेस देन बीटा. समझे? कंट्रोल सिस्टम का कॉन्सेप्ट लग जाएगा यहां पे बड़ी इजीली. चलिए नेक्स्ट, ZS बता दीजिए भाई इसमें. चलो ये वाला आप लोग ट्राई करो, कैलकुलेट करो, बेसिक सवाल है, ट्राई करो. फाइंड द वैल्यू ऑफ ZS. This is a parallel network, so it is better to find the admittance. The admittance will be SC plus 1 upon impedance. Now take the reciprocal. So S plus R by L. So I have taken L common.
एस स्क्वायर में से एल सी कॉमन लेना है, टेक द रेसिप्रोकल एस प्लस आर बाय एल 1 by c ए। ठीक है, वेरी सिंपल। A unit step current is applied to a network whose driving point impedance is this, final and the initial value of the voltage. So unit step current is there. So Is is 1 by S basically. So what is Vs? So V0 I'm applying initial value theorem. So now the numerator is a linear term, denominator is a quadratic term. So this will be 0. Zero and 3 by 4. Steady state and the final value 3 by 4 and 0. Simple. Next, Zs is Vs by Is S upon S plus 3. System is at rest for t less than 0. Vt for t greater than 0. Initial condition जब 0 होती है ना, then you can use these transfer functions. Remember, it is very necessary. This condition is very necessary to use the impedance or the transfer function. Okay. Otherwise we have to go by differential equation. अगर ये condition नहीं होगी ना तो हमें differential equation से जाना पड़ेगा. Remember this. If the network is not initially at rest, then we have to go to the differential equation. So Vt will be C. अगर देखो इनिशियल कंडीशन 0 नहीं होती तब क्या करते? You will cross multiply. ये भी देख लो, मैं बता दे रहा हूं. You will cross multiply, then take Laplace inverse. Now take the Laplace with initial condition. ठीक है, ऐसे करना पड़ता if the initial condition was not 0. समझ गए? If initial condition is not 0, you have to do like this. इस तरह से पहले आप ट्रांसफर फंक्शन से डिफरेंशियल इक्वेशन पे आए, फिर से लैपलास लें with initial condition. But if it is 0, directly you can solve like this. Consider the following pole zero diagram for a system function. Vs upon Is, magnitude of voltage phasor for current equal to sin t. So now crosses are representing the poles and dot is representing a 0. S plus 1. Okay. Now V omega is I omega into Z omega. Here omega is 1. Current you can take 1 angle 0.
I am replacing S by j omega. Now omega is 1. ओके, अभी देखिए क्या होगा। ये √2 एंगल 45 और इसको भी अगर मल्टीप्लाई कर लें डिनोमिनेटर को, बट कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ना जबरदस्ती का। बट इट इज ओनली आस्किंग द मैग्नीट्यूड। सिर्फ मैग्नीट्यूड मांग रहा है ना। तो दिस इज व्हाट 3/2 3, तो √3/2 2/3, तो दिस इज द आंसर 2/3। सिर्फ मैग्नीट्यूड मांगा गया है, सो आंसर इज 2/3। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग circuit. ZS is 2 as S tends to infinity and 3 as S tends to 0. ESE 2004 बच्चों, तो at S tends to infinity 1/SC is 0, short circuit, and SL is infinity, so open circuit. ठीक है, तो इंडक्टर इज शॉर्ट, सॉरी कैपेसिटर इज शॉर्ट, and this value is 2. This is the rule of parallel combination, so R1 is 6. So at S tends to 0, 1/SC tends to infinity open. So if this is open, R1 plus, sorry, parallel, R2 plus 3. This is 3. So R2 is 6. Sorry, R2 is 3. So 6 and 3, A option. 6 and 3. तो ये 0 और infinity वाला concept याद रखें. What happens with inductor and capacitor? The realization of the driving point impedance function ZS is given. What are the values of alpha and beta? What are the values of alpha and beta? तो इसमें भी देखिए वही कॉन्सेप्ट लगाइए, लिमिटिंग S tending to 0 ZS. If you put S equal to 0, it will be 3/beta. Now, S equal to 0 means we have capacitor. Capacitor will be open. So what will be Z if capacitor is open? 2 plus 1 parallel, sorry, 2 plus 1, that is 3. Therefore, beta is 1. दोनों कंपेयर कर लिया. S tending to infinity, take the highest power of S, alpha. S tending to infinity, capacitor is short. Now, if my capacitor is short, ZS will be 2. Therefore, alpha is 2. Alpha 2 and beta is 1. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जहां ZS देके आपसे RC निकलवाए या RC देके Z निकलवाए, तो वहां पे आप 0 और इंफिनिटी का कंसेप्ट लगा सकते हैं. यू कैन ऑलवेज यूज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ 0 एंड इंफिनिटी. A network has a 0 at -1, poles at -1 plus minus J1. The multiplier means the constant function or the constant value is unity. Input is unit step. What is the steady state response?
So the transfer function is now what is output? Output is input multiplied by transfer function. Input is unit step. So what is y infinity? SYS. So 1. 1/2. वैसे तो देखो इसको पोलर फॉर्म में देना नहीं चाहिए. द आंसर शुड नॉट बी इन पोलर फॉर्म बिकॉज इनपुट इज यूनिट स्टेप. तो आउटपुट इज डीसी. डीसी इज नॉट रिटर्न इन टर्म्स ऑफ पोलर एक्सप्रेशन. पोल्स एंड जीरोस बताना है ZS का बेटा. We need the poles and the zeros of ZS. Again, ESE 2005. Poles and zeros of the ZS. So this will be 1 by SC, 9 by S. So take 3 common S downwards. 9 by S plus 3, 3S plus 9, 3 common, S plus 3. Okay. Then 9 by S plus 3 in series with 1. Then you take the parallel combination Z1, Z2. 2S plus 18. PS plus 30. So minus 12 and minus 10. Just a minute. Zero is at minus 12. Pole 2S plus 18 plus 3S plus 30. यहाँ पे तो यार यही बनता दिख रहा है. फिर से देख लेते हैं. 3 into 9 by S. चेक करना एक बारी. 3 into 9 by S divided by 3 plus 9 by S. So 3S plus 9 or 27. So 3 common 9 S plus 3. 9S plus 3. So S plus 3 plus 9 S plus 12 by S plus 3. ये गलती हुआ यहाँ पे. Plus 3. Zero. Pole at S equal to minus 6. So answer will be B. Poles and zeros, so minus 6 and minus 12. Okay. What is the voltage transfer function V2 by V1? बेटा बड़ा इजी है. यहां पे ओपन मान लीजिए. Now these two are in series. The total voltage across both is V1. The total voltage is V1. So V2 is V1. 2S plus 1 by S.
1 by 2s square plus 1. See. Okay, simple. The current behavior in a circuit is expressed like this: 2 e to the power minus t minus e to the power minus 4, 5t. Pole zero pattern. Again, beta, very easy. Take the Laplace. Just take the Laplace. So if you wish to practice the questions based on network and Laplace, you should always try and solve the ESE PYQ. You will find more questions based on network and Laplace. S plus 9, S plus 1, S plus 5. So poles are at minus 1, minus 5. 0 is at minus 9. C option. Correct? C option. Very easy. Poles of the driving point impedance function are at which location? Again, ESE 2005. I need the location of the poles. So this will be 1 by S. This will be 2S. 1 parallel 1 by S. ये आएगा 2 parallel 2S. So pole at minus 1. Pole at minus 1. Last question. Z11 of this network is K1 S plus 3 by S plus 8. What is Z22? This is Z11. What is Z22? So suppose this is R1, R2L. So my Z11 should be R1, take L common, okay. So R2 by L is what? 3. R1 plus R2 by L is 8. Okay. Now when you see from the other side Z22, Z22 will be R2 parallel R1 plus SL. तो ये आया. So now Z22, the scaling factor is now R2, R1 by L. So the denominator is same. R1 plus R2 by L is 8.
and R2 by L is 3. Subtract both. So R1 by L is 5. So K2 S plus 5 upon S plus 8. K2 S plus 5 upon S plus 8. समझ में आया? तो अगर R1 plus R2 by L is 8, R2 by L is 3, so R1 by L will be 5. So that is the answer, beta. So tomorrow we will meet for the last session of electrical circuit, and day after tomorrow we will begin the PYQs of electrical machines. Okay. So I hope you guys are getting benefited by this series, and now you guys clearly understand the pattern of engineering services PYQ. So I'll see you again tomorrow at the same time, 11:30 a.m. Thank you.